हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट लेसन के अंदर हम स्टडी किए व्हाट आर एजियोट्रॉप्स एंड टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड maximum boiling azeotrophs. Now before going to the next topic, which is the most important topic of this chapter, that is colligative properties, before going to that topic, let's compare what are the differences between ideal solutions and non-ideal solutions, and then we will compare non-ideal solutions having positive deviations with non-ideal solutions having negative deviations. So let us discuss. First of all, let's compare and find out the differences between ideal and non-ideal solutions. We have understood that the solutions which obey Raoult's law at all concentrations and temperatures, they are ideal solutions, whereas non-ideal solutions do not obey Raoult's law. So that is the first point of difference between ideal and non-ideal solutions. Ideal solutions obey Raoult's law, but non-ideal solutions do not obey Raoult's law. Let's come to the second point. When ideal solution is prepared, interactions which are found among solvent-solute particles, they are solvent-solute interactions. Solvent-solute interactions are of equal order as solvent-solvent interactions, solute-solute interactions. So in case of ideal solutions, the strength of solvent-solute interactions is equal to the strength of solvent-solvent interactions and solute-solute interactions. But this is not found in case of non-ideal solutions. In case of non-ideal solutions, solvent-solute interactions, they are either greater or less than solvent-solvent interactions, solute-solute interactions. So 2 points हमने आपके साथ डिस्कस किए, points of difference between ideal and non-ideal solutions. Let's talk about enthalpy change, delta H. स्टडी किया है स्टूडेंट आपने। आइडियल सॉल्यूशंस के केस में तो आइडियल कंडीशन मेंटेन्ड है, वहां तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स करने पर जो इंट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट के बिटवीन, उन इंट्रैक्शंस का स्ट्रेंथ तो वही है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस में है। दैट्स व्हाई नो एंथैल्पी चेंज अकर्स इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस जब प्रिपेयर होगा, एनर्जी विल नीदर बी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी विल नीदर बी इवॉल्व्ड। इट मीन्स जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा
आइडियल सॉल्यूशंस के केस में दैट विल बी 0। अगर थोड़ा बोर्ड पे देखा जाए, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा राउट्स लॉ, बेस पे लिखा है राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउट्स लॉ at all concentrations and temperatures. Non-ideal solution does not obey Raoult's law. Point number 2, interactions. In case of ideal solutions, solvent-solute interactions are equal. Equal to whom? Solvent-solute interactions are equal to solvent-solvent interactions, solute-solute interactions. But in case of non-ideal solutions, solvent-solute interactions are either greater or less than solvent-solvent interactions, solute-solute interactions. Third point, enthalpy change that I was talking about. क्योंकि इंट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आ रहा है आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, so here delta H will be 0. That is, no enthalpy change will occur. Enthalpy change का occur ना करना, it simply means that heat is neither absorbed nor evolved. But students, non-ideal solutions के केस में delta H is not equal to 0. Means heat is either absorbed or evolved. क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस इधर ग्रेटर होंगी और लेस होंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हीट एनर्जी विल बी इधर एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, सो डेल्टा एच विल नॉट बी 0 इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा V इक्वल टू 0, दैट इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो फिर फोकस कीजिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया नहीं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस delta V will not be equal to 0. Why? क्योंकि फोर्सेस इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट या तो स्ट्रॉन्गर होंगी या तो वीक होंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बट देयर इज चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस के केस में देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में देयर इज डेफिनेट चेंज इन द एंथैल्पी। एंड लास्ट पॉइंट, azeotrophs, आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉर्म azeotrophs, ये हम स्टडी कर चुके हैं। और azeotrophs फिर कौन फॉर्म करता है? Yes, non-ideal solutions form azeotrophs. So students, here azeotrophs, ideal solutions do not form azeotrophs, but non-ideal solutions form azeotrophs. So these are the few points of difference between ideal and non-ideal solutions. Now, we have already understood that non-ideal solutions are of two types. Non-ideal solutions with positive deviations and non-ideal solutions with negative deviations. Although we have understood the topic, but before going to the next topics, let's recapitulate in the form of points of difference. So, difference between non-ideal solutions having positive deviations and non-ideal solutions having negative deviations. So here is the difference between non-ideal solutions with positive deviations and non-ideal solutions with negative deviations. Interactions. First point, interactions. Solvent, solute,
interactions are less. And in case of non-ideal solutions with negative deviations, solvent-solute interactions are greater. Let's study this point. This is sure that in case of non-ideal solutions, solvent-solute interactions will be either greater or weaker. अगर हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है और उस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस अगर लेस मिलती हैं, लेस मतलब वीक मिलती हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, such non-ideal solutions where the solvent-solute interactions are less as compared to solvent-solvent interactions, solute-solute interactions, such non-ideal solutions are said to have positive deviations. But on the other hand, the non-ideal solutions where the solvent-solute interactions are stronger than solvent-solvent interactions, solute-solute interactions, definitely they will also not obey Raoult's law, but they will be the non-ideal solutions having negative deviations. So the first point says that solvent-solute interactions are less in non-ideal solutions with the positive deviations, and solvent-solute interactions are greater in non-ideal solutions with the negative deviations. Here is the second point. Students, ध्यान से देखिएगा एंथैल्पी चेंज. डेल्टा एच इज पॉजिटिव, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और यहां डेल्टा एच इज नेगेटिव, हीट इज इवॉल्व्ड. लेट अस स्टडी दिस पॉइंट. नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस. In this case, solvent-solute interactions are less. Solvent-solute interactions are weak. When solvent-solute interactions are weak, some energy absorbed हुआ होगा in the preparation of such a solution. और अगर कुछ heat energy वहां absorb हुआ होगा, the value of delta H will be positive. And if the value of delta H is positive, इसका मतलब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो वहां सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा. बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस के केस में डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है. व्हाट डज इट मीन? क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर हैं. व्हेन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, some amount of heat energy is evolved. When some amount of heat energy is evolved, the value of delta H is negative. The process is exothermic. So here we have delta H is negative, heat is evolved. Again, there will be change in volume. Delta V is positive, volume increases. In case of positive deviations, delta V is negative, volume decreases in case of negative deviations. तो स्टडी करते हैं स्टूडेंट. नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस. हियर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर वीक. अब खुद गेस कीजिए. इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर वीकर, देन सॉल्वेंट सॉल्यूट particles will go little bit away from each other. And when solvent-solute particles go away from each other, some space is created between these particles. And as a result of that, the volume of the solution increases. So, the non-ideal solutions with the positive deviations, because of weaker solvent-solute interactions, there is increase in the volume of the solution. And when there is increase in the volume of solution, the value of delta V is positive. That is, volume increases. But in the non-ideal solutions having negative deviations, solvent-solute interactions are stronger. If the solvent-solute interactions are stronger, solvent-solute particle will come closer to each other. That will decrease the volume of the solution. So, the value of delta V will be negative. Delta V negative means volume of the solution decreases. Students, we studied two types of azeotrophs
in our last lesson, minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. पहले तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया azeotrophs are not formed by ideal solutions. They are formed only by the non-ideal solutions. So non-ideal solutions with positive deviations, they form minimum boiling azeotrophs. स्टूडेंट यहां ठीक करना होगा, मुझे थोड़ी सी गलती लगी, मैंने गलत लिख लिया था azeotrophs. Azeotrophs यहां लिखा है. So minimum boiling azeotrophs are formed by the non-ideal solutions with positive deviations. और जो non-ideal solutions हैं with negative deviations, ये स्टूडेंट फॉर्म करते हैं maximum boiling azeotrophs. So minimum boiling azeotrophs are formed by the non-ideal solutions with positive deviations, whereas maximum boiling azeotrophs are formed by the non-ideal solutions with negative deviations. So student, this is all about ideal solutions, non-ideal solutions, non-ideal solutions with positive deviations, non-ideal solutions with negative deviations. We also studied their graphical representation. Now comparison between ideal non-ideal solutions, comparison between non-ideal solutions with positive deviations, with non-ideal solutions having negative deviations, and azeotrophs. So topic ideal solution, non-ideal solution का पूरी तरह से फिनिश होता है. Now let us come to one of the most important topic of this chapter, and that is colligative properties. In this lesson मैं आपके साथ छोटी मोटी इंट्रोडक्शन स्टडी करूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, और फिर मैं अपने नेक्स्ट लेसन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करवाऊंगा. सो स्टूडेंट, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? देखते हैं, मेरी तरफ देखते रहिएगा. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? These are those properties of the ideal solutions which depend on, very important, these are those properties of the ideal solution which depend on number of solute particles and not on the nature of the solute particle. अपने दिमाग में नोट कीजिए इस पॉइंट को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन की ओनली एंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, these properties are called as the colligative properties. So I say that these are the properties of the ideal solutions which depend on the number of solute particles and not on the nature of the solute particles. So let us understand that by taking an example. Suppose I have a pure liquid solvent in a container. एक कंटेनर में हमारे पास प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है. In that solvent I add some quantity of
non-volatile solute, what will happen? You have understood. क्या होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, लोअर हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे और जितना भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, दैट विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज करेगा when some non-volatile solute is added to it, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी क्वांटिटी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। हाउ मच पार्टिकल्स, हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैव बीन एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट। जितना ज्यादा क्वांटिटी में, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो हमने ऐड किया उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा हमने कितनी क्वांटिटी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, हमने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के उस सॉल्वेंट में ऐड किए हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आर बीइंग एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस which depend on the number of solute particle, that is quantity of the solute particle, but not on the nature of the solute particle. Such kind of properties are actually called as colligative properties. Very interesting. These properties are also called as democratic properties. Colligative properties are also known as democratic properties. Students, why these properties are called as democratic properties? Very simple. हमने लिखा नहीं है बोर्ड पे, आपको नोटबुक पे लिखना है खुद। Why these properties are called as democratic properties? जैसे डेमोक्रेसी में what is important? Number of people important है। डेमोक्रेसी में नेचर ऑफ द पीपल डिपेंड मैटर नहीं करता है। इन डेमोक्रेसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। वो पीपल कौन है? क्या वो रिच है या पुअर, ब्लैक है या व्हाइट, वन रिलीजन के हैं अदर रिलीजन के, इस पे डिपेंड नहीं करता। सो एज इन डेमोक्रेसी नंबर ऑफ पीपल मैटर्स द मोस्ट। इन द सिमिलर वे colligative properties also depend on the number of solute particle, not on the nature of the solute particle. So डेमोक्रेसी से थोड़ा रिजेंबल कर गया। जैसे डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। सो फोर डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव टू स्टडी इन दिस chapter.
व्हाट आर दीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो यहां हियर स्टूडेंट हर कोई यहां ध्यान दे। नंबर 1, relative lowering of vapor pressure. I repeat, relative lowering of vapor pressure. Number 2, elevation of boiling point. Number 3, depression of freezing point. Number 4, osmotic pressure. Let's recapitulate. The various colligative properties are relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. So these are the 4 colligative properties. This topic is a long one. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होप करता हूं आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखेंगे, कम से कम 2-3 बार तो देखना होगा, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस टॉपिक। मैं यहां से कैमरा के सामने से जब हटूंगा फॉर 1 मिनट, हमारा कैमरा बोर्ड पे फोकस रहेगा मेरे हटने के बाद। तो मैं होप करता हूं कि आप उस समय वहां पे स्क्रीन शॉट लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे, आप स्क्रीन शॉट लेके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और जल्दी ही। बाय बाय।